हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है साहिल मल्होत्रा। एंड साहिल, वी आर एट द अरुण जेटली स्टेडियम, जहां इस आईपीएल सीजन का पहला मैच होने जा रहा है बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। अब दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की लाइनअप में वो दो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में यहाँ तहलका मचाया था, एडन मार्करम एंड हेनरिक क्लासन। फ्रेश विकेट, हरा टॉप है, लेकिन सीम बॉलिंग के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में एसआरएच है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर बैटर्स? I think Abhi SRH, this is probably one of those very few seasons where people are looking up to SRH just because of the brand of cricket which they are playing. They're playing a phenomenal brand of cricket. There are no half measures. They're not holding their punches back. If a first wicket falls after a brilliant start, they ensure to double it up by sending Klaasen up the order. And this is likely to continue. It's a small ground. The ball travels here. We have seen during the World Cup, high-scoring matches were played over here. Now, after the WPL, they have given enough time for the square to kind of rejuvenate and freshen up for the IPL, because last season we saw Delhi Capitals had a few complaints that pitch is on the sluggish side after the entire domestic season. So I hope there aren't any complaints of such, and Ricky Ponting said he's very happy with the surface, he's very happy with the square, it looks fresh, it will seam around a bit. So hoping for another cracking contest. होपिंग फॉर अनदर क्रैकिंग कॉन्टेस्ट। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव सी बात बोली है, विच आई फील विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स, की यू नो देयर आर नो हाफ मेजर्स। वो यहाँ पे दे हैव प्लान्स फॉर ऑल द बैटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टास्क फॉर देम एज वेल, क्योंकि जिस तरीके के सनराइजर्स बैट्समैन इस फॉर्म में हैं और एक प्लानिंग, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? ये बॉलिंग कैसे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैच में बॉलिंग करके आ रही है दिल्ली कैपिटल्स, दैट वाज फिनोमिनल। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? I think it will be a contest where they'll fight fire with fire, just as Ricky Ponting said, because there are plenty of Australians in the opposite camp. There are plenty of Australians here in this camp. Not really sure about David Warner's participation as we were there. Ricky Ponting said that he's still 85-90%, so they'll probably make out after today's session. But even without him and Mitchell Marsh in the back room, you have Ricky Ponting and Saurav Ganguly, two of the fiercest competitors we have known. And in the opposite camp, you have Pat Cummins, Travis Head, Daniel Vittori in the backroom staff. So plenty of Aussie representation there. So I'm expecting a very thrilling and tactically interesting contest, because both of them would be like looking to kind of outsmart each other. And Ponting is very confident that he has already laid out the plans for the likes of Travis Head, Klaasen, Markram and Abhishek Sharma. So it's going to be an interesting contest. And now is the time where teams wouldn't want to slip, because आप ऊपर से देखेंगे तो 8 और 6 पॉइंट्स पे काफी टीम्स स्कैटर्ड हैं, 6 पे तो काफी भीड़ लगा हुआ है. सो एवरी टीम वुड वांट टू पॉकेट दीज पॉइंट्स, एंड दिल्ली आर कमिंग बैक टू द एक्चुअल होम आफ्टर अ लॉन्ग गैप. 6-7 गेम खेलने के बाद वाइजैग में 2-3 गेम्स खेले, अब यहाँ पर आए. सो दे वुड वांट टू मेक यूज ऑफ दीज कंडीशंस. अब स्क्वायर मतलब का है, ग्राउंड छोटा है. So I think the approach should be for them कि just go and outbat oppositions, because yes, their bowling will struggle here. अक्सर कुलदीप पे ही दामोदार रहेगा, थोड़ा खलील पे रहेगा, बट उसके अलावा मुझे लग रहा है कि they'll look to outbat oppositions, and that should be the way. एंड साहिल, क्रिकेट इज अ कॉन्टेस्ट जिसके अंदर छोटे छोटे कॉन्टेस्ट होते हैं. सो हाउ एक्साइटेड आर यू टू watch out for someone like a Kuldeep and a Jake if he plays here? How excited are you? क्योंकि छोटा ground है, and the kind of mind setup he has, he is someone who just goes all guns blazing right from the word go. So how excited are you to watch these guys? No, very excited for Kuldeep, because we have seen him bowl in the kind of rhythm which we haven't seen him in the past, or right from the time when he made his debut long back. So he's a much improved bowler, very smart bowler, very sharp, had to miss out some games due to injury, but his form and his rhythm holds the key to Delhi Daredevils' chances. There are plenty of high scoring youngsters in that Delhi squad. Rishabh Pant is back amongst the runs, Prithvi Shaw is looking good, Jake is looking good. So all these things, if they kind of click together for Delhi, there could be a formidable side challenging that 4th spot, because अभी भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 2 या 3 आपके टॉप 4 कंफर्म्ड है. लड़ाई या रायता जो फैलेगा वो 4th टीम के लिए फैलने वाला है. सो एक्साइटेड फॉर देम, बट आई एम मोर एक्साइटेड टू सी हाउ ईशांत शर्मा bowls here, because I hope he does play. अब ऐसा ना हो there's like an egg on my face and he doesn't play tomorrow, because Ishant Sharma against the left-handers, Travis Head, Abhishek Sharma around the wicket with that slanted seam, pointing towards the first second slip, fresh surface, green top, greenish surface बोल रहे हैं. So I'm very excited for that contest. It's going to be a contest which probably not many people are expecting it to unfold the way I am expecting, but I hope my words are true and Ishant kind of
Ishant kind of does what he has been doing at this ground. If for he years plays, it's going to be a great contest. Well, we just hope that the spectators will be, gathering here on Saturday, get to see a brilliant encounter, a very entertaining one, क्योंकि दोनों teams बहुत entertain कर रही हैं. DC especially with their batting and Sunrisers with their bowling. Bowling में थोड़ा शायद कहीं ना कहीं उनका with their batting और bowling में शायद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर-उधर है. But Pat Cummins is someone who I is. think Abhi Ricky Ponting gave probably the hint of the game that he said that he's expecting Washington Sundar to play tomorrow. So let's see what happens tomorrow, because smaller ground means a lot of different matchups, a lot of different strategies. You don't have any longer boundary to target क्योंकि सब ऐसा छोटा है. So थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स दोनों टीम्स को सोचना पड़ेगा, स्पेशली बॉलिंग के. बैटिंग में तो कोई थॉट ही नहीं है ना, जाओ और मारो. बॉलिंग में फाइट. Exactly. And that's how T20 works. जाओ और मारो. Well, that's it for now. अभी के लिए इस अपडेट से इतना ही, लेकिन हम आपके पास आते रहेंगे इस मैच से और सारी आईपीएल की सारी खबरें लेकर के. तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट. थैंक यू वेरी मच. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.